common and preferred stocks. We have talked about common and preferred stocks. These are the shares issued by a company to shareholders or investors who want to purchase the portion of equity. These two types of shares are distinct and have got different characteristics and features. Let's first have a look at common shares or common stocks. Common shareholders are actually the true and real owners of a business or an organization, and they are the people who bear all the risk and return. Common stocks are issued for infinite period of time. The reason is that whenever a business is started, the intention is that it will be a going concern. We have already talked about going concern, that a business is likely to continue forever or in the foreseeable future. So common stocks are never issued to be returned back or repurchased and cancelled. However, it is possible that a company or a corporation may repurchase its own shares from the market temporarily. But remember, these shares remain outstanding or issued shares of the company. यानी अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से खरीद भी ले तब भी वो शेयर कैंसिल नहीं होते, बल्कि उन्हें शेयर होल्डर्स इक्विटी में सेपरेटली रखा जाता है, and these shares are called treasury shares or treasury stocks. So common stocks, a part of that may be a treasury stock which is repurchased by the company. These common stockholders bear all the risk of the company. यानी कंपनी को जो लॉस होगा और जो प्रॉफिट होगा, जो ग्रोथ होगी, उसके असल मालिक कॉमन शेयर होल्डर्स ही होते हैं. Common shareholders also have the voting right. That is, in case of annual general meeting or other special meetings, they have the right to vote in favor or against anything that is brought in these meetings. यानी वो अपनी बात कह सकते हैं और उनकी बात की वैल्यू होती है कंपनी की डिसीजन मेकिंग के अंदर. इसके साथ साथ कॉमन शेयर होल्डर्स का ये राइट भी होता है कि अगर पहली दफ़ा के बाद कंपनी दोबारा या तीसरी चौथी बार कभी मज़ीद शेयर्स इशू करे तो एग्जिस्टिंग कॉमन होल्डर्स का ये राइट होता है कि पहले वो शेयर्स उनको ऑफर किए जाएं. And this offer is, by the way, generally made through the issuance of right shares. Common shareholders also have the right to receive the profit which is distributed among the shareholders, that is dividend. यानी common shareholders का ये right है कि वो dividend company से receive करें as and when the company earns some profit. Here it is very important to remember that it is not compulsory for the management or the directors of a company to distribute any profit earned. यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर profit हो तो dividend ज़रूर दिया जाए. The directors and the management of the company may decide to retain that profit and reinvest in the business to earn more for the shareholders. Common shareholders have the last right on the assets in case of liquidation. हमने liquidation की बात पहले की थी, यानी liquidation का मतलब है कि बिजनेस का बंद हो जाना. उस केस के अंदर क्या होता है कि तमाम एसेट्स बेच दिए जाते हैं और उन तमाम लोगों का जिनका कि उन एसेट्स के ऊपर कोई क्लेम है उन्हें पैसे दिए जाते हैं. एंड द सीक्वेंस इन विच दीज क्लेम्स आर रीपेड, द कॉमन शेयर होल्डर्स आर एट द एंड, यानी उनको बिल्कुल आखिर में पैसे रिटर्न किए जाते हैं. द अदर टाइप ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स इज प्रेफर्ड शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स. इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स इसलिए कहा जाता है कि इन शेयर होल्डर्स को कॉमन शेयर होल्डर्स पर कुछ प्रेफरेंसेस हैं. देयर आर बेसिक टू
preferences that these shareholders get. Number one, when the dividend is distributed, the preferred shareholders have the first right to get dividend. यानी dividend अगर distribute होगा तो पहले preferred shareholders को मिलेगा और फिर common shareholders को मिलेगा. और अगर कोई कंपनी सिर्फ इतना ही प्रॉफिट अर्न कर सके कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा सके तो कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा. सो दिस इज अ बिग एडवांटेज. प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रेट फिक्स होता है. दैट मीन्स व्हेन द प्रेफर्ड शेयर्स आर इशूड इट इज प्री डिसाइडेड दैट हाउ मच दे विल अर्न एज डिविडेंड फ्रॉम दैट कंपनी. And the second preference that the preferred shareholders get is to get their original investment back in case of liquidation before the common shareholders. As we have just seen that the common shareholders have the last claim or the last right on the assets, and the preferred shareholders have a right above or before the common shareholders. Another important thing to remember that preferred shares are not bonds. Bonds and preferred shares are similar in a way that there is fixed return which is generally earned on bonds and on preferred shares. But these two are different in a way that on bonds interest is earned, whereas in case of preferred shares it is profit. यानी interest किसी भी कंपनी के लिए expense होता है. अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त कंपनी को बहरहाल इंटरेस्ट पे करने के बाद अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स इवन इफ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट द कंपनी गोज इनटू लॉस, दैट इज ओके. द कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट टू द बॉन्ड होल्डर्स. whereas this is not the case of preferred shares. Preference shares or preferred shareholders would get their return, their fixed return, only if the company earns sufficient amount of profit. यानी अगर उनका रिटर्न 10% है तो पहले ये देखा जाएगा कि क्या कंपनी ने उस साल इतना प्रॉफिट अर्न किया है कि उनका डिविडेंड पे किया जा सके. और अगर कंपनी लॉस में चली जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न या डिविडेंड नहीं मिलता. सो the return or the dividend of preference shareholders is contingent on earning profit. That is, their dividend is a part of profit which is distributed, whereas the bondholders actually get a fixed return whether the company has any profit or the company has gone into losses. Unlike the common shareholders, the preference shareholders do not usually have the voting rights. In some of the cases, when the preference shares are issued, they may be given voting rights, but commonly when we see that preference shares, the voting right is not there. The last point that we need to understand about preference shares is their return is limited to the percentage of dividend which is fixed. यानी अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना शुरू करती है तो कॉमन शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, उनका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता चला जाएगा. बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट दैट एक्सीडिंग रिटर्न्स बिकॉज देयर रिटर्न्स आर कैप्ड टू द रेट ऑफ डिविडेंड विच इज प्री डिसाइडेड. यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम वही रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जो कि उनका फिक्स कर दिया गया है अगर वो सिंपल प्रेफरेंस शेयर हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बहुत सी किस्में हैं. हम अगले मॉड्यूल में उन किस्मों के बारे में, उन टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स के बारे में बात करेंगे.